it's Friday night and the action resumes here at the eISL Season 2, brought to you by Nodwin Gaming as we head on into the final few days remaining to our league stages to find out who shall be the top 6 teams that make it to the playoffs. I'm Fixes, I'm joined along with TT, and TT, what's up? How are you doing? आई एम वेरी गुड एंड स्पेशली आज के दिन पे देखिए मैं तो बहुत अच्छा हूँ बट जो क्लब्स खेलने वाले हैं वो कितने अच्छे हैं पता नहीं क्योंकि उनके लिए जो सिनेरियोज है वो बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हो चुका है क्योंकि कुछ कुछ क्लब्स है जिनको इधर से एक भी मैच ड्रॉप करना मीन्स उनका पूरा टूर्नामेंट ड्रॉप होने जैसा हो जाएगा एंड उसी के साथ कुछ कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो कि शायद अभी के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर सकते लेकिन वो दूसरे के जो पार्टी है वो ज़रूर खराब कर सकते हैं तो कहीं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बन रहा है और उसके बीच में मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ. All right. I mean, you've already addressed the elephant in the room over here. And the interesting point is made about that because, yes, the first matchup, folks, that we have is a matchup like that. On one side, we have a club that has no chance into qualifying. But what can they do is injure or literally handicap a team or a club that might have a chance of qualifying. But we'll get to that story a little bit later. But right now, let's take a look at the format, folks. And for all the new viewers out there, we are going through with our league stages, which began from the 28th of February and will go on till the 26th of April. So this is the what you can say. After tonight, we just have 2 more days remaining. So that's it, and we have almost completed more than 3/4 of our matches. The final quarter of matches remaining, and then we go to the playoffs. That will be held from 6th to 7th of May, where we'll have 6 clubs participating, and whoever wins that also, gets to play in the FGS. The two of both the players do have a slot. But taking a look at the prize pool, it is the whopping 33 lakh rupees on the line, out of which the first position team gets 4.5 lakh rupees, the second position team gets 2 lakhs, third and fourth share 75,000 each. यस एंड उसी के साथ साथ जो मौका मिलेगा इधर अपने क्लब को एंड अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का वो तो एक अलग प्राउड रहने वाला है. सो ये प्राइस पूल तो है जो कि बहुत ही अच्छा है लेकिन उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे क्लब्स एंड हर एक प्लेयर कोशिश करेंगे कि वो इधर जीत के जाए और ताकि उनको मौका मिले कि वो अपने कंट्री को एंड क्लब को रिप्रेजेंट कर पाए ऑन वर्ल्ड स्टेज. देखिए ये कहने की जिस तरीके से अभी चल रहा है सिनेरियो एंड यस उसके पहले हम लोगों को पता चल जाएगा इसके बाद जब हम लोग स्केड्यूल देखेंगे कि क्या होगा आज का सिनेरियो और किस तरीके से क्या होने वाला है फिक्सेस. जी हाँ, once we take a look at this is what we have to talk about the first matchup. Jamshedpur FC, Chennaiyin FC. Jamshedpur FC's run is pretty much over. Right now, they just have to play the final 2 games for as a mere formality. But what they can do is ruin things up and stir things up for the top 6. So Chennaiyin FC, they are barely just on the precipice of the mountain where they either stay there or literally take a fall. And Jamshedpur FC, well, they'll be the drivers of that. They decide. If they win, then Chennaiyin FC's chance of making it to the playoffs become very slim. But the second matchup we have is a do or die for both the teams. ATK Mohun Bagan and Kerala Blasters FC. But the third matchup is more of an ego matchup where we've got to decide who's the better club of the two. Northeast United FC facing Mumbai City FC. It is going to be an absolute cracker. And I hope you do not miss that as we segue into the leaderboards. And this is where, every sort of permutation combination does apply. So Hyderabad FC, they just have 1 match remaining. And at the very least, they could get to maybe 14 points. At the very maximum, they could get to 14 points. But for Chennaiyin FC, they can, secure 6. And they might get to 17. So Chennaiyin FC, for doing that, they'll have to win the remainder of the games. Considering ATK Mohun Bagan have 2 games remaining, if they win this match against Kerala Blasters FC, it's over for Kerala Blasters FC. Yeah. But if they lose, then Kerala Blasters FC suddenly could just get into the contention of qualifying for the top 6, provided that Jamshedpur FC beat Chennaiyin FC. यस एंड उसी जगह पे कहने की जो मैचअप है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि देखिए डीके की अगर बात किया जाए वो अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं एंड वो अगेंस्ट खेलने वाले नवीन के. सो जिस तरीके से आज आ रहे हैं जमशेदपुर एफसी, उनका कोशिश यही है कि शुरुआत से जो है वो जीतना है. ऑन द अदर हैंड चेन्नई एफसी
उनको भी पता है कि उनको भी ये गेम जीतना है, क्योंकि अगर चेन्नई एफसी आज मैच ड्रॉप करते हैं, देन बाकी जो क्लब्स है उनको मौका मिल जाएगा। सो शुरुआत जो है वो डीके एंड नवीन के बीच में होगा, एंड जो आखिरी गेम होगा वो होगा अरविंद एंड टिके टाउन के बीच में। सो अरविंद, जिनका फॉर्म इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट उतना खास नहीं था, जाते जाते अगर कुछ ब्लो देके जाते हैं तो चेन्नई एफसी का कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन रुक सकता है। सो आज के दिन पे जितने भी मैचेस है, लास्ट गेम को छोड़ के, लास्ट गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फुल पावर पैक गेम होने वाला है, बट आई डोंट थिंक कि उसमें ज्यादा कुछ है। वो दोनों ही क्लब्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। सो दोनों के बीच में लड़ाई होगा, कौन बेटर क्लब है और कौन बेटर परफॉर्मेंस पे, बेटर फॉर्म पे, तो वो चीज हम लोग को पता चलेगा, एंड एकदम प्रॉपर एंटरटेनिंग गेम होगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन के ऊपर है, 10 ये जो शुरुआती 2 गेम्स हैं वो चारों क्लब्स के लिए, चारों तो नहीं बट इन चारों क्लब्स में से 3 क्लब के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीके मोहन बगान, केरला ब्लास्टर्स। एटीके मोहन बगान अगर आज हार जाते हैं, केरला ब्लास्टर्स जीतते हैं, देन उनके पास फिर भी एक चांस रहेगा। लेकिन केरला ब्लास्टर्स चाहेंगे कि जमशेदपुर एफसी आज शुरुआती जो मैच है इसमें चेन्नई एफसी को हरा दे, ताकि केरला ब्लास्टर्स एफसी का जो चांस है वो बने रहे। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस जो है वो रहने वाला है आज, और आज हम लोगों को बहुत who gets through and who doesn't, as we venture into the first game, and that is going to be our lovely DK, the informed DK, representing Jamshedpur FC from left to right against Naveen. Naveen that, we're kind of not happy with, because the defending champion and his crown definitely does feel heavy, as DK wants to punish Naveen right off the bat. A beautiful chance had been created, but unfortunately was an offside. So I like this idea coming in from Jamshedpur FC, where they get DK to become the first player to play this matchup. And now DK, he can just play freely, right? He has no pressure really, where he can really show his A game out there. And Naveen, he must be under extreme duress. At this moment, completely opened up with Lionel Messi. Won't miss the shot. And DK, my man, he scores, giving Jamshedpur FC such an early lead. आज डीके फ्री माइंड से खेल रहे हैं, लेकिन चेन्नई एफसी बहुत ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं, एंड स्पेशली नवीन का फॉर्म कुछ खास जा नहीं रहा था, उसका तो प्रेशर था ही, लेकिन उसके ऊपर ये प्रेशर और आ चुका है कि उनको इधर से मैचेस जीतने होंगे। एटलीस्ट ये मैचअप तो जीतना होगा, नहीं तो फिर सब कुछ डिपेंड करेगा आखिरी मैचअप के ऊपर। तो नवीन वो तो नहीं चाहेंगे, एंड सेम चीज चेन्नई एफसी की तरफ से भी हम लोगों को देखने के लिए मिला है। वैसे उनका फॉर्मेशन चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन वो भी चाहेंगे कि जिधर उनको मैचेस जीतने का एकदम 100% मौका मिले। 100% तो कभी भी नहीं होता, बट हाँ ज़्यादा चांसेस रहे उसी जगह पे खिलाएंगे। सो टिक आउट ये है इधर विंद के ऑपोजिट पे, तो मुझे तो लगता है कि दोनों ही तरह से विन विन सिचुएशन है, बट सब कुछ जैसे कि कल भी बात कर रहे थे, इधर आके डिपेंड करेगा कि को-ऑप मैच कौन जीतता है उसके ऊपर। बट इस बार जो शुरुआत है डीके की तरफ से काफ़ी अच्छा हुआ है, एक बार फिर से अटैक पे जा रहे थे, बट डिफेंडिंग काफ़ी अच्छा। बट नवीन का यही प्रॉब्लम रहा है, वो कुछ जगह पे तो डिफेंड कर लेंगे, लेकिन उनके जो डिफेंडर्स है उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है, और वो गैप जो है वो बहुत जल्दी वो फिक्स नहीं कर पाते, एक साथ ला नहीं पाते प्लेयर्स को, जिसकी वजह से बीच से निकलते हुए देखे हैं हम लोग, रन निकालते हुए, थ्रू बॉल्स खिलाते हैं ग्राउंडेड उनके खिलाफ, एंड वो सब कुछ काम आ जाता है। सो नवीन को एटलीस्ट कोशिश करना होगा कि वो इधर से एक ड्रॉ के साथ फिनिश करे, ताकि चेन्नई एफसी को थोड़ा सा एज रहे। Oh my god, oh my god. Now this is where things might go awry. You could see the pressure that's sort of building up on Naveen, kind of tending to lose those balls. He's not supposed to do that. And DK, he's just gonna, take away all the hair strands of Naveen right now. He's just gonna frustrate him down to his wits. And at this point, I think, Jamshedpur FC would be looking to throw a spanner in the works of Chennaiyin FC. And this is a very smart move that they've made, getting, DK up against Naveen, because look at that, almost goes for a reverse elastico, wanted to take that shot. But yeah, I mean, the exact ideology was that DK comes in and informed DK, and he takes down Naveen, and then they go on to win the co-op, because you wouldn't want to face Karman Tikka on a decider game. And if that happens, then Chennaiyin FC might just walk through. And Arvind's going through a
really bats into form lately, but that's a nice ball given on towards Hakimi. R9 needs to start closing in. Hakimi looking for that cutback, goes for a ball roll, but Maldini, he saves it, Titi. फाइनली एक और जिस तरीके से ये मौका बना था, शायद ये गोल आ सकता था, लेकिन नवीन को इधर समझना होगा। लेकिन नवीन का अगर आप फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हो तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे प्लेयर निकल चुके हैं, उनके जो लेफ्ट साइड पे थी हर्नांडेज खेल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, वो ऑलरेडी चढ़ चुके हैं इधर अटैक के लिए। सो वही जगह पे अगर बॉल वो इधर लूज करेंगे फिर प्रॉब्लम होगा, जो कि बार बार उनका बॉल लूज हो भी रहा है। लेकिन इस बार के लिए पास बेहतरीन, लियोनेल मेसी बेहतरीन ड्रिबलिंग के साथ बीचों बीच आएंगे। रोनाल्डिनियो शॉट में पावर इसीलिए नहीं था क्योंकि उल्टे दिशा पे खड़े होकर शॉट लिए थे। अगर घूमने का थोड़ा भी मौका मिलता तो मे बी ये गोल हो सकता था, बट नवीन अभी बहुत ही स्ट्रांगली एक अटैक बनाते हुए, थियो हर्नांडेज, रोनाल्डो, और थोड़ा सा पीछे इधर पुश करने की ज़रूरत हुआ, और आई थिंक यही चाहते हैं डीके। लेकिन देखिए मौका तो है, मौका अभी भी है। ओह माय गॉड, कनेक्शन सही नहीं बना, ग्रीन टाइम नहीं था और इसी वजह से बॉल गया बाहर, और उसी के साथ एक बार फिर से जाएंगे। बट एक चीज़ तो है, देखिए इधर डिफेंस जो है वो और बेटर करना होगा, नहीं तो अगर वो इधर से प्लेऑफ्स पे चले भी जाते हैं फिर भी बहुत मुश्किल होने वाला है चेन्नई एफसी को। Yeah, I think Chennaiyin FC, in fact, Naveen on a personal, individual level needs to really step his game up, because the Naveen we saw in the first season is kind of lost, to be honest. You know, that confidence that he had, that charisma that he had, isn't visible anymore. And initially we thought that, yeah, it's just a bad phase, but that kind of went on going, and his dipping form did not have matches to play. And Naveen has been struggling in every single one of them. And DK, he's just here to pinch on his injury, apply all that salt and make him hurt even more, as he had almost created a chance. But Naveen now a little sturdy on his defense, finally trying to stop DK on his tracks. And when you've got DK playing up against you, you need to watch out for those driven passes. You need to watch out for those driven lob throughs, those aerial passes coming in. So a lot of things that Naveen has to keep in mind when he's playing, because DK, he's he's been scoring a lot of goals. Of course, hasn't been reflected in the same fashion in terms of how they are on the scoreboard. Their journey has come to an end, but this is where DK, in his final few games, can really just amp up the show, bring in all that drama, all that excitement, as things are looking really dicey in the top 6. Who is going to make it to the top 6? Who will be the winners of that 5th and 6th spot? That's the big question, because the top 4 pretty much has been solidified, folks. But we approach the end of the first half, and Jamshedpur FC, courtesy to that DK's early strike, they are 1 goal ahead. एंड ये एक गोल के साथ कहने की, देखिए डीके को पता तो है कि या लाइक उनके पास एक एडवांटेज बन चुका है, लेकिन नवीन वो इधर कोशिश करेंगे कि पहले तो उनके डिफेंस पे थोड़ा उनके फॉर्मेशन को मेनली तो चेंज करना होगा सबसे पहले, क्योंकि इस फॉर्मेशन के साथ हम देख पा रहे हैं कि कभी कभार राइट पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जा रहे हैं, कभी कभार लेफ्ट पे। अगर आप विथ जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, देन आपका ये प्रॉब्लम होता है। तो वो विथ जो है वो प्रॉब्लम लाइक मेंटेन करने की ज़रूरत है। एंड उसी के साथ जैसे कि आपने कहा कि बहुत टाइम ऐसा आता है जब भी आप डीके के खिलाफ खेलते हो, एटलीस्ट उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ड्रिवन पास आएगा। बट डीके वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, ड्रिवन पासेस तो आएंगे, लेकिन अगर आप उनको सीधा जो शॉर्ट पासेस होते हैं उसके थ्रू, जो टिक्की टाका होता है उसके थ्रू अगर आप अलाउ करते हो कि हाँ आपके एकदम डिफेंस को वो तोड़ पाए, तो वो ड्रिवन पास के लिए ले जाएंगे। फिर आप सोचोगे कि ड्रिवन पास आएगा, लॉब थ्रू पास आएगा, बट नहीं, वो ग्राउंडेड पास खिला के निकल जाएंगे। तो डीके बहुत ज़्यादा फास्ट पेस प्लेयर है। डीके स्लो खेलना पसंद नहीं करते, वो जब खेलते हैं एक एग्रेशन दिखता है उनके गेम के अंदर। एंड आई थिंक इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स जो कि स्लो खेलते हैं थोड़े, उनके लिए प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि जमशेदपुर एफसी का जो ओवरऑल पोजीशन है पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो उतना खास नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली डीके की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर।
Oh, and this is what we have been talking about. And another goal. Just for a moment, I felt like could have been offside, but no, wasn't the case. As Jamshedpur FC net in the second one. And TT, this absolutely changes everything for Chennaiyin FC. You know, after the first half, Naveen would have had it in mind. You know, it's just that one goal lead. I can cover up for it. And suddenly, DK scores one more. And at this pace, he's gonna keep scoring, keep hurting, start devouring Naveen. And for him, oh Naveen, come on. It's been trying to desperately for those chances. And you know what, I really feel that Naveen should anticipate DK's passing lanes, because you can see time and again he's going for those through passes there. And if you can figure out where he's going to make a pass, because all these players playing at the highest level in India right now could know who's opened up, and you have to have that vision what's going to happen. Because again, this is a second routine for DK when he goes for those lob throughs, and now, oh no, this would have been ludicrous had that gone in. A roulette being there, and I think he went for a finesse. But regardless, that's DK magic going on, and we're all taken by it. But okay, I felt like this was a golden chance. I felt like Naveen should have directly taken a shot, but this is where the pressure starts dismantling you. आज हम वही डीके को देख रहे हैं जो कि शुरुआती में लाइक सेकंड थर्ड फोर्थ गेम पे हम लोग को देखने के लिए मिला था, क्योंकि उसके बाद से तो फिर प्रेशर बिल्ड होना चालू हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके खेल रहे थे, बट आज डीके एंजॉय कर रहे हैं। और ये डीके सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप अगर जो काम कर रहे हो, जो गेम खेल रहे हो, उस पर अगर आप एंजॉय कर रहे हो, दैट मीन्स आपका क्रिएटिविटी कूट कूट के निकल के आता है, और वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ऐसे पासेस निकल रहे हैं, फिर आखिरी मोमेंट पे जाके वो स्किल मूव्स, एंड इससे एक ही चीज़ हो रहा है, नवीन के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और नवीन जस्ट वो गोल कंसीड कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, इधर नवीन गोल तो कंसीड कर ही रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है कमन टिक्का के ऊपर भी, क्योंकि उनको कोऑप पे जाके भाई इनी हाउ गेम को जीतना होगा, एंड देन जाके कमन टिक्का को उधर मैच जीतना होगा अरविंद के खिलाफ। वी नो कि अरविंद का फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा, बट हु नोज, आज जब प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहेगा कि वो एकदम बस्ट आउट करके आए और वो विदाउट प्रेशर जब खेलेंगे वो कुछ अलग ही खेल के जाए, हो सकता है। तो प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्ड होगा। चेन्नई एफसी शुरू ड्रॉज के साथ हुआ था, बीच में लॉस हुआ, एक जीते, फिर उसके बाद इस तरीके से रहा पूरा उनका जर्नी। लेकिन एक और अटैक बन रहा था डीके की तरफ से, लेकिन इस बार समझ चुके थे नवीन, और बेहतरीन जगह पे बॉल इधर ड्रिबल किया गया। देखिए ये मूव काफी अच्छा बनता हुआ, वर्जिल वैन डाइक, अगर वर्जिल वैन डाइक को भी डॉज कर पाते तो आई थिंक एक गोल आ सकता था, लेकिन इस बार काउंटर पे जाने की कोशिश डीके की तरफ से, बट बहुत ही अच्छे से संभाले नवीन। Yeah, and you know, even right now, as things are, for Naveen, he has to. There's no other option, and this is the right time where you need to get your Haaland in. I mean, go all Genesis, right? Go all Genesis, get his magic man Haaland, and try and score a goal. And for Naveen, I think I would just urge him to just take a shot, because what's happening in the final third is getting that ball, and there's sometimes that room there, and in that moment he looks for that one extra pass, and that is what pressure does to you, right? You want to ensure that you're scoring. But at this point, DK, he's been so good, right? Especially on his attacking front, like we've discussed, right? He's very fast in making his plays. He instantly triggers the runs for his wingers, and if he's kind of playing through his central midfielders, then he kind of takes that ball either to the right or left, whoever is on the run. And if he sees a run already early on, then you can see him going for those driven lob throughs, right? So that sort of has been a huge problem for Naveen, which is yet to be addressed. And talking about Chennai FC, yes, their run has been quite erratic, to be honest. Like you said, they win a game, and how do they win those games? It has been, mostly their co-op match victory, and then Karman Tikka just comes in to save the day, right? And this is where, this has always been one of those pivotal issues that hasn't been addressed yet. Naveen has to step up. There's no second thoughts on that, because
if Chennaiyin FC makes it to the playoffs and if their star does not perform, then they're going nowhere with it. They'll be instantly just potted down by the other teams, right? Other clubs who are playing a much better FIFA, who have both the players, firing on all cylinders. And this is where you cannot just rely on a single man, right? So Naveen, I know he's got it in him. He's been a champion. He's got to just channel. He's got to manifest that mentality and get back into it. But TT, with just mere 12 minutes remaining in the game, feels a little far-fetched for me at this point. एंड आई थिंक देखिए इधर आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे एंटायर सिनारियो पे एक बार के लिए भी लगा नहीं नवीन की तरफ से कि वो बहुत थ्रेटनिंग कुछ कर रहे हैं, बट फाइनली इस बार एक मौका मिला है इस पे, अगर वो कैपिटलाइज कर पाते हैं देन एक बहुत ही अच्छी बात होगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि हकीमी के साथ फुली रेडी थे। हालांकि एक डिफ्लेक्शन, बॉल अभी भी मौजूद, ज़िनेडिन ज़िडान नहीं कर पाए कंट्रोल। तो ये था लेकिन इस पूरे टोटल ऑल ओवर 83 मिनट्स के अंदर यही था शायद सबसे बेहतरीन अटैक जो कि पूरा बिल्ड हुआ था। और ये आपने एकदम सही पॉइंट बोला क्योंकि देखिए जब वो इधर प्लेऑफ्स पे अगर चले जाते हैं उस जगह पे सिर्फ कर्मेटिका के ऊपर अगर आप चलिए भरोसा कर भी सकते हैं कि हाँ कर्मेटिका जिता देगा, लेकिन आपका कोऑप गेम फिर उस पर क्या होगा क्योंकि कोऑप पे तो बाकी सारे क्लब्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं और अगर आप पहला 2 हार जाते हो देन तो उधर काम तमाम हो ही गया। तो कहीं ना कहीं जो है स्टेप अप करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उसी जगह पे डीके का आज जिस तरीके का फॉर्म देखने के लिए मिला वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है एंड आई थिंक यही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होगा उनके कोऑप गेम पे भी। बट एक बार फिर से काउंटर पे रोनाल्डिनियो खाली दौड़ते हुए, नो डीके कम ऑन। ज़्यादा करते करते कुछ नहीं हुआ। बाय द वे रोनाल्डिनियो के साथ भी वो शॉट ले सकते थे, दूर दूर तक खाली था, कोई डिफेंडर नहीं था। और यही चीज़ के बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं क्योंकि नवीन का ये हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो डिफेंस के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है एंड मोस्ट प्रोबेबली उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनके डिफेंडर्स के ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि देखिए आप एक टाइम में गेम के ऊपर तो 11 प्लेयर को कंट्रोल कर नहीं सकते, बहुत कुछ डिपेंड करते हैं इंस्ट्रक्शंस आप क्या दे रहे हो उसके ऊपर। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक बार फिर से बैठ के चेकआउट करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी टूर्नामेंट के हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इसके बाद सिर्फ वो सुप्रीम टाइटल दिख रहा है सामने। या तो आप जीतिए या फिर आपका इतने दिन का जो मेहनत है वो फिर तो नहीं होगा उसका कुछ काम। Yeah, even Naveen in this particular game lacked a lot of creativity, to be honest, because we had seen him trying to take those similar shots every single time, right? He was trying to approach from the box. We did not see him utilize his wings a lot. He did not go for those cutbacks. What he was trying to do was just try to beat through DK's defense and perform a skill move, go for that extra one pass. And in doing so, DK was so well prepared. DK did not even feel threatened for majority of the game. And I think, and on the contrary, DK, he has been, he kind of exploited every single area in the pitch. He was building plays from the center, he was taking advantage from the wings, and every single time he was triggering those runs around his wingers, right? And that is where, that is where I felt Naveen felt a little short. He should have, anticipated those runs and kept his men down a little bit initially, and then could have played on the counter attacks because DK was looking so threatening, right? Just make sure that at a certain point where DK is vulnerable, just press on his weakness, which Naveen sort of failed to do, and as a result of which Jamshedpur FC have dealt the first blow to Chennaiyin FC, have won the first matchup. But from here onwards, I think now they're going to be truly tested because the co-op game, Jamshedpur FC have to win anyhow. To make sure they take those 3 points, and yeah, that's not going to change anything in terms of the overall leaderboards. But taking a look at the scorecards, it was a 2-0 victory. But coming back to the conversation, correct me if I'm wrong, TT. I really feel that DK, in fact, Tika should have opened things up instead of Naveen there. Rather, start off with a victory, go into the co-op, and then try to win there and end it. Do not go to the third game. Do not, try to think, that this game has to go there, because I feel Chennaiyin FC as a co-op unit have been playing really decent FIFA, if not the best.
but they have held Hmm. on, right? Karman Tikka, I think you've seen on multiple occasions what he does is he gets the ball, and in the final third, he kind of tends to go for those dribbling moves and the skill moves that he uses, and he scores. And that sort of has propelled and kept Chennaiyin FC at such a position in the overall standing. So, what do you think? Was it a wise idea for going with the usual starting order, or do you think the latter would have been better? आई थिंक यू आर डेफिनेटली राइट हियर, बट मुझे लगता है कि शायद उनका थॉट प्रोसेस कुछ अलग होगा। शायद वो ये सोच रहे हैं कि जो शुरुआत में अगर वो नवीन को गेम दे देते हैं, देन नवीन के ऊपर देखिए फॉर्म नहीं चल रहा, तो उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगा उनके ऊपर। तो वो चाह रहे हैं कि बाय एनी हाउ अगर वो अपने फॉर्म को वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैक में मौजूद है जिधर जाके फिक्स हो सकता है। तो वो प्रेशर उनके ऊपर उतना नहीं होता जितना हो जाता है एकदम आखिरी गेम खेलने पे। अगर बाई एनी केस कमेंटिक का उनका गेम जीता बट कोऑप हार गए, देन नवीन के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मे भी ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से शायद अभी नवीन को आगे भेजा जा रहा हो और नवीन को ही कंटिन्यूअसली भेजा जा रहा है। बट आई थिंक इधर फॉर्मेशन के ऊपर आई डोंट थिंक कि ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स होता देन वो हारते हुए देखते। बट हम लोग चेन्नई एफसी को उतना ज्यादा हारते हुए नहीं देखे, दैट्स व्हाई वो 11 पॉइंट्स पे है। वो ड्रॉज बहुत सारे निकाले, ड्रॉज इसीलिए निकाले हैं क्योंकि कभी कभार क्या हुआ है कि पहला मैच हार चुके हैं, देन सेकंड मैच जो कोऑप है वो ड्रॉ हो चुका है, कमेंट्री का फिर जीत चुके हैं, जिसकी वजह से आई थिंक सबसे ज्यादा ड्रॉज निकालने वाले टीम में भी शायद चेन्नई एफसी हो या तो चेन्नई एफसी है। No. Apologies there, viewers. I think a little bit of a miscalculation from my part. It was Hyderabad FC who have got the maximum draws. Yeah. Chennai FC have just managed to get 2 draws, 3 wins, and 3 losses so far. या बट जो ड्रॉज है वो हम लोग को बैक टू बैक आता हुआ दिख रहा था। एकदम स्टार्टिंग में अगर देखा जाए शुरुआती स्टेज पे 2 ड्रॉज आए थे बैक टू बैक, देन एक विन आया था, उसके बाद लॉस आया। तो इस तरीके से कहीं नहीं कि उनका जर्नी जो है वो चलता हुआ दिखा। विन तो आ रहा है, ड्रॉज भी आया था, वो हारे भी, लेकिन जो वो प्रेशर है वो प्रेशर इतने दिन से फील इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ा बहुत जो ज्यादा मैचेस है वो ऑलरेडी खेल के रखे, उनके पास पॉइंट्स भी था। बट अभी जाके जब लाइक एटी के मोहन बगान उनके जब मैचेस हुए, क्योंकि एटी के मोहन बगान का तो ऑटोमेटिकली मैचेस कम था और वो पहले गेम्स पे उतने खास नहीं चल रहे थे, बट धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने क्लचअप किया उसके बाद फिर चेन्नई एफसी के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि हैदराबाद एफसी भी उसी कैटेगरी उसी पोजीशन पे आ गए। तो कहीं ना कहीं जो है उस प्रेशर से इनको डील करना पड़ा। बट चेन्नई एफसी आई थिंक एक खतरे की घंटी बज चुका है, स्पेशली फॉर दिस गेम। उनको जीतना ही होगा, ड्रॉ से भी काम नहीं बनने वाला, उनको ये गेम जीतना ही जीतना है अगर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना है तो। No, there's no second thoughts to that, right? And Jamshedpur FC. Now this is where my concerns arise because now Arvind, he's playing without any pressure. And DK, please come on, stop doing it. And yeah, these cheeky moves sometimes. And DK, we have seen on few occasions. Yesterday, in fact, we saw how quickly he adjusted, right? He went for an elevated lob pass. Found Van der Sar ahead, found Van der Sar open, and he scored a goal out of a header. And he did that even in his individual matchup. So goes on to show that DK has a lot of confidence going in. But right now, Chennai FC, there you go. There you go. This is where they sort of tend to thrive, right? This feels like a common Tikka goal, a good pass coming in from Naveen, and he just takes it. And had Naveen done more of this in his individual matchup, then the storyline here could have been different. No second thoughts. Yes, there was there was Theo Hernandez who was pushing with you, but do not have to go for that extra pass. Believe in that player. These players are absolutely cracked. Just take that shot and it goes in. It's that simple. Sometimes. बिल्कुल। एंड हम जानते हैं कि इधर देखिए हम लाइक मुझे तो मिला नहीं है कभी ये टीम ऑफ द ईयर कार्ड, लेकिन जो गोल्ड कार्ड है उसके साथ मैंने खेला है और वो भी गोल मार देते हैं। और ऑपोजिट में वैन डे सार तो बहुत बार लाइक आते ही आते हैं, क्योंकि गोलकीपर्स का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कम ही होता है बाकी प्लेयर से। देखिए फिर से एक बार सेम जगह से विद एम्बापे एक और गोल, एंड ये चलता जाएगा। ये इस पूरे एंटायर टूर्नामेंट के अंदर बहुत कम प्लेयर्स है जिन्होंने प्लेयर्स के एबिलिटी के ऊपर जो है वो लाइक जो कार्ड्स है उसके एबिलिटी के ऊपर थोड़ा जो है भरोसा दिखाया है, क्योंकि अगर वो दिखाते और ज्यादा गोल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते, क्योंकि ये कार्ड्स ही वैसे हैं। और वैन डे सार आई डोंट थिंक कि कोई भी गोलकीपर, सिर्फ वैन डे सार नहीं, कोई भी गोलकीपर
इनका जो शॉट्स है वो रोक सकते हैं, स्पेशली रोनाल्डो हो गए, फिर एम्बापे हो गए। ये जो कार्ड्स है ये क्रैक्ड है, बार-बार आप भी कहते आए हैं फिक्सेस, लेकिन वो शॉट्स किसी ने लिया नहीं, बट आज लिया जा रहा है। देखिए इधर से भी लिया गया। आज एम्बापे के साथ सब डांस करेंगे, आज कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, सरप्राइजेस आएगा और डिकी के चेहरे पे वो छोटा-सा हँसी, उससे पता चल रहा है कि नहीं आज तो होगा, आज यही होगा। Not going to be easy for Chennaiyin FC for sure. Still holding on to that one goal lead, but I really loved how he curled that ball through, right? And exactly, both these clubs are now just going all out. They just want to enjoy themselves right now. And for Jamshedpur FC, they could clearly, create a lot of upsets over here. Of course, Hyderabad, Kerala Blasters FC, everybody would be hoping that Jamshedpur FC takes a W out of here, and then Chennaiyin FC. That still won't really put them out of the race, but will then be under massive pressure. And this is the kind of a creativity that we wanted to see in that first individual matchup where Naveen was playing, right? Go for those long balls, try to make those crosses happen, and try a few things differently, and do not, guess second guess yourself. Just have that confidence. And just doing that mere confidence is going to do you wonders, because these players are so efficient that they've got that muscle memory. They know exactly what to do at what times. The reaction times are really fast. And this is Kamantika, 120%, and he will not miss with Lionel Messi. A classic Tikka Town goal on display, and Chennaiyin FC again have maintained that 2-goal lead, go up 3-1 the scoreline at just 23 minutes into the game. इस गेम पे और बहुत सारे गोल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जब प्लेयर्स इस मेंटेलिटी के साथ आ जाते हैं ना कि कुछ भी हो जाए मुझे तो गोल मारना है, और ये मेंटेलिटी दोनों ही साइड से दिख रहा है, और दोनों ही साइड से एक-एक करके प्लेयर प्रेशर में। एक तरफ से नवीन, ऑन द अदर एंड अरविंद। इस बार मौका, एम्बापे जगह ढूंढ रहे हैं जिधर से शूट लेंगे, लेकिन दिया नहीं गया। अभी भी बॉल है, अभी भी खतरा टला नहीं, बट फाइनली जाके ये भी नहीं था इधर। ओह माय गॉड, वैन डाइक इधर क्लियर करने गए, डिफ्लेक्शन हुआ और ये गोल भी जा सकता था। बट हाँ, ये गेम देख के एक चीज तो पता चल रहा है कि दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के खिलाफ आए हैं और वो जस्ट चिल कर रहे हैं मैच खेलते खेलते, क्योंकि दोनों के गोल्स पे राइट से शॉट ले रहे हैं, लेफ्ट से शॉट ले रहे हैं, पुश कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। और ये चीज आई थिंक मुझे लगता है कि आखिर के कुछ दिनों में सब क्लब्स की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। बट जो गोल्स आए हैं आज चेन्नई एफसी की तरफ से, ये पहला 3 लाजवाब, स्पेशली पहले 2 तो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि या एम्बापे था, एंड ऑब्वियसली शॉट पावर एंड सब कुछ प्रॉपर ऑन टाइम था। बट विद मेसी जिस तरीके से अंदर गए वो बहुत बेहतरीन था, एंड सेम विद जमशेदपुर एफसी। लाइक वो अभी तक कहीं ना कहीं जो है अपना वैसा गैप ढूंढ नहीं पाया है। और अरविंद आज भी थोड़ा प्रेशर में लग रहा है, बट किस प्रेशर में वी डोंट नो। आई थिंक उनको थोड़ा सा चिल करना चाहिए। Yeah, I mean, of course, need to just relax and tone it down a little bit. And I think it comes down to how you're feeling individually, right? Have been having really rough games, and even Arvind knows at the back of his head that he's kind of messed things up, and oh my goodness, just saved by the whiskers there. But yeah, I think on a personal level, I think Arvind and Naveen can relate with each other, right? They've kind of underperformed, and we've seen better days in season 1. And goes on to, I kind of tend to wonder what went wrong. Is it just the consoles? Because early on we were on a different one, and there were a lot of players that had shifted to the new gens. Other players on the old gen had kind of capitalized. And this time, when everybody was on the same page, then few of the players just kind of went ahead, and that sort of has been a worrying concern. And a lot of players have been struggling lately, but again, Karmantika and Naveen trying to score that goal. A roulé coming out from Ronaldinho with Zinedine Zidane. Looks for a pass, a beautiful one, and he will score. Wow. Oh my goodness. This is the Chennaiyin FC that we have come to know and love, and this is what they can do. And now, things are falling in place for them, finally. Well, with this co-op win, if they get it, right, because we are approaching the end of the first half and already a 3-goal lead, Jamshedpur FC have been looking quite shaken over here. So, if they win this, then Arvind,
Oh god, the skies are gonna fall down on him. Karman Tikka, he's gonna unleash all that wrath, death and destruction onto Arvind, and that could absolutely change things around. And Chennai FC could suddenly get those 3 points, where Kerala Blasters FC, then their hopes of making it to the playoffs kind of end then and there only. अभी तक के देखे गए बेस्ट कुछ टिकी टकास में से ये एक था फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरीके से बिल्ड हुआ, राइट लेफ्ट स्क्वायर किए, फिर बहुत ही सही श्रिंक पे आए दोनों के दोनों प्लेयर, नवीन एंड कमल टिक्का, एंड एक प्रॉपर केमिस्ट्री देखने के लिए मिला। ये आखिरी गोल, वाह, मजा आ गया एक बार में। अगर बात करें तो पोजीशनिंग के मामले में चेन्नई एफसी बहुत आगे, शॉट्स भी इधर 6 लिया गया है, जिसके वजह से लाइक 4 शॉट ऑन टारगेट एंड चारों के चारों इधर गोल पे। आई थिंक 5 शॉट ऑन टारगेट, जिसमें से 4 गोल पे इधर कन्वर्ट हुआ है। एंड काफी अच्छा गेम अभी तक तो जा रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। बट ऑन द अदर हैंड जमशेदपुर एफसी, वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके का कुछ प्ले आएगा। बट आई थिंक वो उतना ज़्यादा प्रेशर अभी लेंगे नहीं, तो कमबैक तो हो सकता है। 3 गोल का फासला विनो किया, आखिरी के 10 मिनट पे भी कमबैक हुआ है। इस बार मौका मिल चुका है, गोल होना चाहिए और होगा भी, और यही गलतियां नहीं करना है चेन्नई एफसी, उनको ये गलतियां नहीं करना है, क्योंकि अगर ड्रॉ भी हो जाता है इधर, फिर भी शायद वो खुश नहीं होंगे इस ड्रॉ के साथ, क्योंकि उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। Yeah, and this is where I think Jamshedpur FC need to go on and score a few more and end things here and there, but a little bit of a heavy touch on Kylian Mbappe. The ball just went out of control, but a really nice goal being scored there. Earlier phases of the second half, but now they have opened themselves up to maybe another one, but thankfully somehow has been saved. And this is where I think DK needs to pull off something miraculous, and Arvind will also have to play a huge crucial role in that. Needs to give that good pass. He's an informed player, let him take that shot, or maybe just DK could create that ball, give it to Arvind, and Arvind knows how to score. He certainly can do that, but a little bit of an overthinking there on Chennai FC's part, going for that pass where you could see now that right wing has opened up. So Lionel Messi has a lot of options, but instead decides to get a few men up, and DK wanted to give that pass there, but now again exposed with R9 just pacing through, but Van der Sar gets a really beautiful save. एंड इधर कॉर्नर पे अगर रहते शायद बेटर रिजल्ट मिल सकता था, लेकिन काफी अच्छा लगा। वैन डे सार की तरफ से बहुत ज्यादा शानदार सेव था। पर जमशेदपुर एफसी उनके लिए मौका बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेंट्रली वो जाएंगे तो बड़ा बहुत डिफेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, बट इस बार गोल होगा। विंग्स में प्लेयर रहते हुए भी वो मिडिल से जा रहे हैं, और उसका फायदा इस बार मिला है। इतने देर से डिफेंड करते जा रहे थे चेन्नई एफसी, बट जमशेदपुर एफसी जस्ट एक गोल की दूरी, और चेन्नई एफसी उनको अभी समझना होगा, अभी से सतर्क होना होगा। आखिरी 30 मिनट बाकी है, बाय एनी हाउ उनको एक गोल स्कोर करना है, या फिर बॉल पोजीशन जितना ज्यादा हो सके अपने पास रखना है, क्योंकि अगर इधर से इक्वलाइज हो गया, देन जाके कमेंटिक अगर जीत भी गए, फिर भी कहीं ना कहीं जो है उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। सो इधर जमशेदपुर एफसी को खोने के लिए कुछ नहीं है, बट चेन्नई एफसी खोने के लिए बहुत कुछ है, तो उनको उस हिसाब से खेलने की जरूरत है। लेकिन देखिए विथियो हर्नांडेज बॉल लेकर आगे निकल जरूर रहे थे, एक पुश किया गया जिसकी वजह से थ्रो, ओके सो फाइनली फाउल तो उधर लिया नहीं गया है, बट थ्रो इन लेंगे। और जब जब इधर अटैकिंग थर्ड पे पहुंच रहे तब तब कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश था विद एम्बापे कि वो इधर एंट्री ले बॉक्स के अंदर, लेकिन वो हो नहीं पाया। काउंटर पे चेन्नई एफसी, इधर गोल करना ही होगा, क्या कर पाएंगे? ओह लुशियो। At that point, I felt he would have directly gone for a shot, maybe gone for an outside footer or a finesse, or could have just tapped it through, because we could see the goalkeeper was being controlled by a player. But yeah, and in these moments, Chennai and FC are starting to question themselves again. And a 4-1-2-1-2 formation going in for Jamshedpur FC. We've seen, they've been utilizing their flanks really well.
And for Chennaiyin FC, they've been just getting right head on. And here you could see that goal, no open one. And Jamshedpur FC, they say thank you so much and score it. So few defensive lapses there. They have been well utilized, and then the third one comes in. Very well organized passes, and this one was a little scrappy, but still the defense kind of crumbling down, and this is where the pressure has now shifted on Chennaiyin FC, because now just a mere goal separates them, and now they're looking a lot off. So this is the right time actually to take that pause and kind of relax a little bit, change a few tactics, make a few substitutions, and come back into the game and score one more, and then completely go fully defensive. A two-goal lead, even at around 70 to 75 minutes, is fine. Chennai FC can still defend that. ऑन द अदर एंड जमशेदपुर ऐसी यही चाहेंगे कि सिर्फ तो एक ही गोल का फासला है, चलिए चलते ऑल इन एंड उसके साथ गोल करते हैं, जो कि शायद किया भी जा सकता है इधर पीएपीएल अप्लाई करके। उसी के साथ हम देखें कभी कभार कि 4-2-4 के फॉर्मेशन पे भी चेंज कर लेते हैं, तो वो चेंजेस अगर आता है तो मे भी हो सकता है। पहले के जगह पर रोनाल्डिनियो को लेके आया गया है, दैट मीन्स इधर पेस भी मिलेगा, एजिलिटी भी मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इधर चांसेस है कि एक इक्वलाइजर आ जाए। बोल रही रहे थे उसी बीच में रेबलिंग इधर देखने के लिए मिलता हुआ, लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ लेके गए। अगर राइट हैंड साइड जाते, हॉरिजॉन्टल अगर जाते तो शायद वो पास कर सकते थे हकीमी को, बट दैट्स ओके, कभी कभार हो जाता है। लेकिन बहुत पॉजिटिव मूव्स, आखिरी 20 मिनट टाइम तो बहुत है एक गोल करने के लिए, बट क्या वो कर पाएंगे? आज ये गलती फिर से हो रहा है। आई थिंक चेन्नई ने ऐसे कल मैचेस नहीं देखे थे, आज अगर इधर गोल खाते तो आई थिंक मैं तो उनको यही कहता कि कल की गलती से सीखना चाहिए था। Oh, but this could have been really deadly. Nice creativity coming in from Chennaiyin FC, and the ball has been stolen at a very crucial position over here. So yeah, I think Jamshedpur FC at this point, considering they've got nothing to lose, they can go for that 4-2-4. They can even go for a PAPL, constant pressure being applied, and throw the entire kitchen sink, and would want to take that risk, and it's worth it, because if you kind of sort of end things around in the second game itself, it's good for you. But yeah, finally finding Ronaldinho on that right flank, back passes on towards Atal, and yeah, Atal has been bottom again, this time from the right position, however, and also does have that 5-star weak foot, which really makes sure that you got that pace along with you, and you kind of have that extra scoring option also if it comes down to that. But with R9 will take that shot, it is green timed, and there you go, Jamshedpur FC have equalized. Chennaiyin FC just bottled that 3-goal advantage, that lead they had, and आई थिंक इधर जो गोल्स स्कोर हुए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिरी के मोमेंट पे कोई गोल स्कोर कर रहा है कि नहीं वो देखना, एंड एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था उनके कैम्प्स को देखते हुए, जब गोल कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। आखिरी 10 मिनट, आई थिंक ये 10 मिनट चेन्नई एनएफसी के इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट में से एक होगा, जिसपे उनको गोल स्कोर करना है, क्योंकि ड्रॉ हो चुका है। देखिए इधर से अगर इसी स्कोर लाइन के साथ खत्म होता है, दैट मीन्स उनको एक से ज्यादा पॉइंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी एक बार जमशेदपुर एफसी जीत चुके हैं, और इधर ड्रॉ, दैट मीन्स अगर नेक्स्ट मैच चेन्नई एनएफसी जीतते भी है तो एक ही पॉइंट मिलेगा। सो that's such a crucial impasse. That's such a crucial impasse. We have the game crashed. And like you said, I completely agree with you, right? Because with this equalizer, and I feel that the momentum has completely shifted. And now Jamshedpur FC, they kind of have taken over that driver's seat. They've been scoring constantly. And in the second half, it felt like Chennai FC have been just broken down to bits. I couldn't understand. They've been opened up, exposed so defensively multiple times. And now this is where Jamshedpur FC, they were kind of getting into the groove. And this is exactly a winner's mentality that Jamshedpur FC is showing over here. And this is what happens when you're playing without any pressure, right? You can go freely, you can explore various options, you could do a lot of variations in your attack. And that is something that we have seen from
Jamshedpur FC so far, right? They've been trying to score out of corners. They've been taking those long balls. They haven't even hesitated from taking those finesse shots. They've been doing every single thing right. But with just mere 10, 12 minutes remaining into that game, I'm now starting to ponder, do we get to see a winner? Do Chennaiyin FC hold on to their nerves and do not tremble and score that late winner? Or is it going to be Jamshedpur FC just hitting another home run and making it checkmate for Chennaiyin FC and ending their run in this particular matchup? Because if Jamshedpur FC score one more goal, then there's nothing left for Tikka to salvage. And this is exactly where my worst horrors might come true, because Chennaiyin FC were banking on the fact that they'll win the co-op and then Tikka is going to win their final game. So that is the kind of a mentality they had to come up with, especially with Naveen losing that first game. So this kind of changes the dynamics completely, because now even if it gets tied, right, for Chennaiyin FC, 1 point is still okay, considering they're at 11 points. They could get that 12, still be fine. That's still acceptable, but provided that Arvind loses his game against Tikka. If Arvind sort of gets a draw also, then those 3 points will go to Jamshedpur FC. बट आई थिंक विद दैट मुझे लगता है कि अगर आज वो ड्रॉ निकालते भी है फिर भी वो खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आज वो ड्रॉ निकालते हैं, नेक्स्ट गेम है केरला ब्लास्टर्स एफसी एंड एटीके मोहन बगान के बीच में। ड्रॉ अगर होता भी है, एटीके मोहन बगान अगर जीत जाते हैं, देन उधर 12 पॉइंट्स पे वो भी पहुंच जाएंगे और उनका जो गोल डिफरेंस है वो कम है, और जब वो जीतेंगे वो और कम हो जाएगा, लाइक माइनस से वो प्लस पे भी जा सकता है। तो उस जगह पे तो ऑटोमेटिकली चेन्नई एफसी अभी तक जो पूरे टूर्नामेंट पे वो टॉप 6 पे बने हुए थे, शायद फॉर द फर्स्ट टाइम वो हम लोगों को 7th पोजीशन पे आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे उस चीज को। तो कहीं ना कहीं ड्रॉ निकालना इधर ऑप्शन उनके पास है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड इधर देखिए, आज ये देखने के लिए मिलेगा कि किसका जो प्रेयर्स है वो काम आ रहा है, किसका लक इधर काम आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग लाइक प्रेयर्स किए होंगे अपने भगवान के पास कि हरा दो इनको, जिता दो हमको, तो किसका प्रेयर्स आज काम आएगा? क्योंकि तीनों के तीनों क्लब्स, केरला ब्लास्टर्स एफसी, उनके लिए भी चाहिए कि ये लाइक एटीके मोहन बगान एंड चेन्नई एफसी बॉटल कर जाए। चेन्नई एफसी वो चाहेंगे एटीके मोहन बगान केरला ब्लास्टर्स एफसी वो खुद में ही ड्रॉ कर ले ताकि कोई ना जीते, क्योंकि कोई भी जीते वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और स्पेशली एटीके मोहन बगान ना जीते। तो आज तो प्लेयर्स का जोर किसके अंदर है और किसके फैंस के जो प्लेयर्स है वो काम आएगा, वो सब कुछ आज देखने के लिए मिलेगा। बट अभी के लिए तो मुझे लग रहा है चेन्नई से दूर जाता हुआ हल्का फुल्का करके सिचुएशन इस मैचअप के ऊपर, तो एटलीस्ट अगर वो विनर स्कोर दिए, मतलब कर दिए आखिरी 10 मिनट में, जो कि हम लोगों को नहीं पता, बट अगर कर दिए देन तो सब कुछ कहानी पलट जाएगा और वो खुशहाली आ जाएगा, फिर चेन्नई वासी हो आप बहुत खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है देन आई थिंक लास्ट मैचअप फिर भी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करना होगा। Yeah, so much calculations going on. Everybody is reading out their prayers, and for Jamshedpur FC, they will have a lot of support, coming out of the other clubs as well. Hyderabad FC would be hoping for the same. Kerala Blasters FC would also be hoping that they win, because now it has come down to survival. And when it comes down to survival, right, it's every man for himself. They might be the best of buddies outside the game. Does not matter. To each his own. And with that being said, folks, we do have the scorecard in front of you, and let's find out what the outcome was. And did it end? Was that a winner scored by Karman Tikka? What's the scoreline over here? There's no chance on earth that TK and Arvind have scored one goal. They've surely scored 4. At least I've seen 4. So a little bit of an error. And this is still not the real scoreline, ladies and gentlemen. We are waiting for it to get updated, which will eventually get updated. Alright, if 5 goals have been scored by Chennaiyin FC, then they have won the game. And they have made sure that, they have changed things around. या अगर वो 5वां गोल एंड विनर्स स्कोर कर दिए तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इधर पॉसिबल हो सकता है कि वो आखिरी गेम पे जीते, एंड उसी के साथ चेन्नई वासियों आप खुश हो जाइए, क्योंकि 5 तो अभी के लिए दिख रहा है, बट हाँ बहुत जल्दी अपडेट होगा, एंड उसके साथ हम लोगों को एकदम प्रॉपरली
पता चल जाएगा क्या चेन्नई एनएफसी अभी भी गेम के अंदर बने हुए हैं। देन जाके कमेंट का वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे नेक्स्ट गेम पे। बट अरविंद, मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी अरविंद वो चाहेंगे कि वो बेटर परफॉर्म करे। बट यस, जैसा हम लोग सोच रहे थे फिक्सेस वही हुआ कि इधर 4 गोल स्कोर किया गया था जमशेदपुर एफसी की तरफ से, बट आखिरी जो गोल था वो आता हुआ दिखा है चेन्नई एनएफसी की तरफ से। दैट मींस अभी भी वो गेम पे बने हुए हैं और अभी भी वो इस मैचअप से 3 पॉइंट लेके जा सकते हैं। सो एटीके मोहन बगान, केरला ब्लास्टर्स एफसी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जाके हैदराबाद एफसी एज वेल, सबके सब सोच रहे होंगे भाई क्यों हुआ ये आखिरी गोल, बट ये हुआ है। और चेन्नई एनएफसी अभी भी सर्वाइवल कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से। बट सब कुछ अभी डिपेंड करेगा अरविंद के ऊपर। प्रेशर अगर ज्यादा नहीं रहे या फिर प्रेशर लेके नहीं खेले देन मे भी जाके कुछ कर सकते हैं। बट टीका टाउन आई थिंक वो तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होके आएंगे एंड उनको जिस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते हुए देखे हैं, मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है इधर चेन्नई एफसी के लिए। या एंड देखिए इधर जिस तरीके से अभी तक चला है इस पूरे एंटायर सिनेरियो के अंदर, कुछ कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इधर देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि स्पेशली अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए अरविंद जेनेसिड के ऑपोजिट पे, अगर हम लोग हैदराबाद एफसी के मैच पे देखें, हैदराबाद एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी जब हुआ था, अरविंद आखिरी मोमेंट तक 1-1 करके रखे थे और फिर जाके जेनेसिड एक गोल किए, दैट लाइक उसके बाद जाके यानी कि हैदराबाद एफसी को एक लीड मिला। सो अरविंद ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही छोड़ दे रहे। शुरुआती स्टेज पे कुछ हो रहा था कि हाँ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था उनके गेम्स, बट जैसे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा लेट तरफ आए, जैसे कि ओडिशा एफसी के मैच पे 8-8 को उन्होंने हराया भी था, उस जगह पे उस गेम को उन्होंने जीता था। तो कहीं ना कहीं जितना एंडिंग की तरफ आया है वो थोड़ा थोड़ा करके देख के लग सकता है कि हाँ वो हार गए हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो कम किया है। स्पेशली जेनेसिड जैसे प्लेयर के खिलाफ आप 1-1 रखते हो इतने सारे प्रेशर में, जिधर आपका टीम एकदम बॉटम पे है, तो सिर्फ प्रेशर ये नहीं है कि वो हार रहे हैं, उनका क्लब इधर बॉटम पे है, इतने सारे प्रेशर के बीच में आप 1-1 रखते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस गेम से विन भी बहुत कुछ देखा जा सकता है। टिक्का टाउन, खमन टिक्का, उनको इधर यही कोशिश करना चाहिए कि शुरुआत से प्रेशर बनाया जाए और गोल स्कोर करें। नहीं तो अरविंद भी अगर एक बार गेम में जम गए देन गोल स्कोर करना टिक्का टाउन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। Completely agree. Because Arvind, what has he got to lose? But all to achieve glory, and there you go, the ball given away. Wanted to take an instant shot, but no. Tika recovers quite quickly. But now Tika goes on a counter attack with Ronaldinho just trying to pace in through. He's got Hakimi there with R9, and we know this is where Tika really thrives. This time, howsoever, Van der Sar was prepared, and Arvind lives to fight another day. So, at this point, you know, Arvind, we haven't seen Arvind in playing the decisive game much, right? And now players are kind of practicing their set routines, especially their corners, where they've got a lot of tall players and a lot of tall physical players like Ruud Gullit, you've got Virgil van Dijk. You could get them into play. I mean,
Getting Ibrahim just for corners, I won't really recommend that unless you're kind of YOLOing. But Jamshedpur FC have a really good chance, but they're marginally offside. बट आज अरविंद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक माइंडसेट के साथ उतरे हैं। जिस तरीके से कमेंटिका की तरफ से अटैक दिख रहा है, कुछ उसी तरीके से अरविंद भी कॉन्स्टेंटली इधर प्रेस किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो होल्ड करे, जैसे कि यूजुअली वो थोड़ा बहुत डर के खेलते थे काइंड ऑफ, अगर देखा जाए आखिर के कुछ गेम्स पे वो थोड़ा डर के खेल रहे थे, हार्ड डिफेंस के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे थे। बट आज वो फ्रीली खेल रहे हैं, वो देख के पता चल रहा है, बार बार प्रेस करते जा रही है। उससे भी एंड देखिए आखिरी कुछ पासेस एंड मे बी एक गोल आ सकता है थियो हर्नांडिस, बट बहुत शानदार तरीके से चेस किया गया विथ हकीमी। बैक हुआ, बट अरविंद बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पे वो स्माइल, और यही चाहिए होता है। एंड जाते जाते अगर वो इधर जीत के जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी पॉइंट्स के साथ इधर जाते हैं, उनके पास अभी भी चांस है कि वो बहुत सारे क्लब्स के ऊपर खत्म करे और पॉइंट्स टेबल पर एटलीस्ट नीचे ना रहे। लेकिन इस बार मौका बना था, बट बहुत अच्छे से संभाले अरविंद, और कमेटी का कंट्रोल भी नहीं कर पाते, और कभी कभार हो भी जाता है कि नहीं होता। ओ माय गॉड अरविंद, ओह नो, अरे यहाँ पे एक अच्छा मौका था टीटी nonetheless, right? Because yeah, he went for the right options but got a little impatient there, and now Tikka looks to punish, and he will. He does in fact. Tikka Town shows his magic as Arvind, instant sucker punch. Such a nice chance created there by Arvind, but then Tikka gets that little room, and that's all he needs to score. And you have to be careful when Tikka gets in through there. He's so good in that final third. You cannot let him, go solo. He will perform those skill moves. He will dribble past your defenders, and he will score. And Arvind, knowing all of that, let it happen, and can't really believe himself with how he lost a chance in scoring a goal, and instead he conceded one. That's gonna bite him, because now Tikka is looking for that second, but Arvind needs to get back, needs to score one. He's been looking good today. I mean, with the kind of chances he's created so far, all he needs to be is a little bit more clinical, a little bit more sure of what he's trying to do. Oh my God, a lot of ruckus around that final third, but still Tikka manages to steal the ball away. अरविंद आज सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन इधर अरविंद आज उनके साथ है, उनका बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं उनका ये गोल पोस्ट। लेकिन देखिए सब कुछ सही चल रहा है, बट होता है ना कि आप बहुत दिन से लड्डू नहीं खाए हो, या फिर आपको मिठाई खाना है और आपको अचानक से इतने सारे लड्डू मिल जाते हैं, देन आपको वो चीज़ भी थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगता है कि फिनिश कैसे करे इतने सारे लड्डू को। तो कुछ उस तरीके का सिनेरियो था, बट धीरे धीरे देखिए आज सब कुछ ट्राई करेंगे विद बॉल अभी भी है गेम के अंदर, बट थियो हर्नांडिस फाइनली लिया। एंड आई थिंक मुझे लगता है देखिए वो वही हो रहा था अरविंद के साथ कि उनको मौका मिल रहा है, वो बना रहे हैं, बट वो फिनिश करने के लिए उनको हल्का सा टाइम चाहिए, और आई थिंक वो सेकेंड हाफ पे और भी ज्यादा लीथल दिखेंगे। टीटी यहाँ पे मंत्र जाप हो रही है और कुछ नहीं। वो जो गोल मिस हुआ, आई एम प्रीटी श्योर somebody's prayers just came true, and could be Jamshedpur FC's fans, could be Hyderabad FC's fans, could also be Kerala Blasters FC, but regardless, Jamshedpur FC still trailing with that one goal, could get second. There, Chennaiyin FC, nice control shown by Karman Tikka, being very patient. He's not letting it get to his mind, but has lost the ball there. Oh, wow. That is beautiful piece of dribbling there. But now, can Arvind capitalize that with R9? A little bit of a ball roll. Looks for passing options. Not getting enough. Still just playing around. Needs to pass it, but then again, it was just those men pressing over him. It was too difficult for him. And Karman Tikka gets a go again at Arvind. Through that left wing, but Virgil van Dijk and Jairzinho coming on to show their defensive prowess and have successfully managed to fend the attack.
अरविंद नहीं, अरविंद पूरा प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में आके वो क्लिनिकलनेस हम लोगों को टिकट डाउन की तरफ से ही ज्यादा दिख रहा है। एक बार देखिए फिर से मौका, ये गोल होना ही चाहिए, ये एटलीस्ट गोल होना चाहिए था, बट नो, इस पे भी नहीं कर पाए अरविंद। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अरविंद को थोड़ा सा शांत होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज वो जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जिस तरीके से वो टिकट टाउन के डिफेंस को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, वो बहुत शानदार है। सिर्फ चाहिए वो एक प्रॉपर टाइमिंग शॉट जो कि नेट्स पे जाके फिनिश हो, एंड उधर ही इनका काम हो जाएगा। तो अरविंद का गेम देख के आई डोंट नो व्हाई आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इतने दिन से उनको हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट फाइनली जब वो आज खुल के खेल रहे हैं तब एक फ्लॉलेसनेस दिख रहा है उनके अंदर, बट वो फिनिशिंग वो अभी तक नहीं मिला। बट आशा करता हूँ कि ये सेकेंड हाफ उनके लिए बेटर हो। I mean, I could see those glimpses of DK in Arvind's performance tonight. You could see that innovation there. He's gone for those green time finesse shots. He's been playing those lob-driven through passes. He's been relying a lot on that, and he's splitting Tikka's defense apart. But what has been the Achilles' heels for Arvind so far has been the fact that he hasn't been clinical at all. There have been 2-3 opportunities where he could have easily scored a goal, and he has sort of bottled that one up. But now gets another go at it with Kylian Mbappe also making the run. Arvind getting a little too impatient there. Instantly went for that through, but was deflected. And now still has the ball. Still has an entire half to get an equalizer, to kind of restrict Chennaiyin FC to get just that 1 point. Share points at this point does not matter if Jamshedpur FC lose or win. But what matters is if they lose, then Chennaiyin FC, they're going to secure that spot, and Chennaiyin FC are going to breathe a huge sigh of relief. I mean, we'll still be in the fighting, but we'll be in a better position nonetheless. And the pressure gets humongous. And then you could say that maybe Kerala Blasters FC would just go out of the equation there. Their chance, their hopes would get shattered. But right now, Karman Tikka, barring that one goal that he scored, he's been kept at bay. But we know Karman Tikka, you cannot put a leash on this man. He explodes, and when he does, it's so difficult to contain him. As now went for that power shot with R9. And now this is where Arvind is starting to read Tikka's movements. He's realized that Tikka is not one of those players who goes for that extra one pass, right? He gets with the player right inside the box, gets that skill move, and then tries to take a shot. So Arvind has been quite patient in defending Tikka, at least as of now. That's some nice movement with the ball. Pass on towards Eusebio, then that second chain of pass going out of his hands. अटैकिंग थर्ड गेम उतना खास नहीं जा रहा है अरविंद का, एंड इसी वजह से अभी तक स्कोर लाइन हम लोग को 1-0 देखने के लिए मिला है। और शायद जब तक वो अटैकिंग थर्ड पे बेटर नहीं करेंगे तब तक शायद हम लोग को स्कोर लाइन यही देखने के लिए मिलेगा। मे बी टिकट डाउन आके एक और गोल स्कोर करके चले जाए और उसके बाद पूरा गेम जो है वो सील कर दे। पर देखिए आज जिस तरीके से खेला जा रहा है गेम तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रहा है, एकदम साइड बाय साइड, कोई किसी को एक जगह नहीं देना चाहते। यूसेबियो के साथ फाइनली बचाएंगे, एंड मुझे तो लगता है कि कुछ देर के लिए टिकट डाउन एक सोच पे आ गए थे, क्या ये इक्वलाइजर है, क्या मैं ये गोल कंसीड करने वाला हूं, बट नहीं, अभी भी 1-0 टिकट डाउन। वी नो कि वो फिनिशिंग बहुत अच्छे से करते हैं, बट आज टिकट डाउन का भी जो है वो अटैकिंग थर्ड पे गेम उतना खास गया नहीं है। वो एक गोल उन्होंने किया था जिधर एकदम फर्स्ट पोस्ट पे उन्होंने फिनिश किया, एकदम पोस्ट के बाजू से निकल गया विथ रोनाल्डो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या ऐसा कुछ शॉट्स जाएगा जिधर वैन डे सार बीट हो जाएंगे, और उसी पे गोल हुआ था। उसको छोड़ के ज्यादा कुछ आज एटलीस्ट कमन टिक्का की तरफ से तो देखने के लिए मिला नहीं है। जितने भी स्टाइलिश मूव्स, जितने भी ड्रेवलिंग्स, वो सब कुछ ज्यादा से ज्यादा हम लोग को अरविंद की तरफ से दिख रहा है। लेकिन जो अरविंद की तरफ से एक चीज नहीं दिखा वो है फिनिशिंग, और जिसके अगर आप वो नहीं करते हो देन आपका ये सब स्टाइल जो है वो सिर्फ स्टाइल ही रह जाता है और आपको रिजल्ट नहीं मिलता। मेसी आएगा, कुछ हो सकता है। रोनाल्डो मौका बन रहा था, मार्टिनी बॉल छीन चुके हैं, बट अभी भी कंट्रोल पे। इस जगह पे तो बॉल लूज नहीं करना चाहेंगे जमशेदपुर एफसी, क्योंकि लूज करेंगे तो काउंटर झट से जाएगा। एक पास के लिए रुकते हुए रोनाल्डिनियो, क्या वो शॉट ले चुके हैं, फिनिश भी किए
दोनों आ चुके हैं सेम पेज में। चेन्नई एफसी, टिकर टाउन, अभी उनको कुछ अलग करना होगा, नहीं तो डिफेंस अरविंद का तोड़ना बहुत टफ होने वाला है इसके बाद। Yeah, now you could see Kamantika went a little defensive with he was attacking before that, and now he's changed his tactics. But yeah, I mean, coming back to this one, this was a more composed goal scored by Arvind here. He was very calm, and that was needed. And with Lionel Messi also being brought up over here, we've seen, that Arvind has been trying to go for those finesse shots from outside the box. You With Messi, you get access to both Trivela and finesse shots, and you never know. With Messi, you could get that extra curl with that pace, and it could beat Van der Sar. And at this point, Arvind has scored that equalizer. Certainly would be looking forward into scoring the winner. But same goes for Kamantika, as he needs to find it, needs to be the hero for his club, as Arvind, very, very agile, very quick in response, did not let Kamantika shoot there. And that's an offside. That should be an offside. Yeah, pretty much. So, yeah, I think at this point, Karmantika has realized that Arvind has been playing a lot of those through balls, and sometimes it's really dead obvious. And from here onwards, again a similar quality of ball being played. Did receive it on Ronaldinho, but could not hold on to it. But has managed to steal the ball at a very important position. A lot of defenders there. And this is where, it happens to the best of the players, right? You kind of instantly think of your next move. So the moment he got the ball, he kind of wanted to give a next pass. But now with Erling Haaland, he's gone through. But no! TT and offside. Yes, with this ball अभी फिर से आ चुका है जमशेदपुर एफसी के पास। जमशेदपुर एफसी आज अरविंद बारिश कर रहे हैं बॉल की, इधर अटैक पे जाके सिर्फ ऊपर से जाएगा और इधर ढूंढ रहे हैं रोनाल्डिनियो को। रोनाल्डिनियो पिछली बार रिसीव भी किए थे, बट बाद में आउट ऑफ कंट्रोल गया। टिकर टाउन वो अभी शायद समझ नहीं पा रहे कि कैसे बीट करे। इस बार वैन डर सार बाहर, एक्स्ट्रा पास, फिनिश नहीं कर पाएंगे। अरविंद आज सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ करने की जरूरत था, और जिसके वजह से वो मेंटल गेम खेल रहे हैं टिकर टाउन के ऊपर। और ऑब्वियसली कमेंटिका के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है आज, क्योंकि उनको जीतना ही था ये गेम, और उस प्रेशर का भी फायदा मिलता हुआ इधर बीच में अभी भी बॉल मौजूद था लियोनेल मेसी के पास। बट आखिरी 7 मिनट, ये 7 मिनट अगर ड्रॉ भी निकाल लेते हैं जमशेदपुर एफसी, ओ डिफेंस अरविंद खेल रहे हैं आज। This match is becoming an absolute nail biter, folks. And really hard to say where it goes, who wins this one. With Pele, no, Arvind cannot make that wrong pass. But now, since Karmantika has it, does not have a lot of opportunities. He needs to, fight for the ball, needs to score one. And this is a beautiful pass at Jamshedpur FC. Arvind has done it. He scored the winner, maybe. Oh, what a defense-splitting driven pass there. And that could bury Karmantika 6 feet under. With just mere 3 minutes remaining, Chennaiyin FC cannot settle just with a draw. They have to score one more for a draw also, and then the winner. And seems like the prayers have come true. Seems like Jamshedpur FC could mark one of the biggest upsets, and that could be Chennaiyin FC on the receiving end. Just look at the beauty of that pass. Oh my goodness. TT, lightning has struck tonight, and Tikka is getting burnt alive. वो सब क्लब्स, जितने भी क्लब्स अभी के लिए रेस पे है, सब क्लब्स के प्लेयर्स, सब क्लब्स के फैंस, सबका प्रेयर एक साथ आके कहे ने कि आज अरविंद को कुछ अलग सुपर पावर्स दिए हैं। पूरे सीजन में जिस तरीके से खेलते हुए नहीं दिखे अरविंद, आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, शायद बहुत कम प्लेयर से हम लोग ऐसा गेम देखे। और यही होता है वो चीज जो हम लोग बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं कि प्रेशर रिलीज कर दीजिए, प्रेशर में खेलेंगे तो नहीं होगा। आज प्रेशर नहीं है और अरविंद यहां है। मेसी आए, मेसी ने कंट्रीब्यूट किया, पास किया, और मेसी अभी के लिए शायद बाहर भी गए मोस्टली। हालैंड
आ चुके हैं। यस, मेसी की जगह पे बेलिंगम। तो देख रहे हैं कि आप कितना जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है। अभी फुल्ली डिफेंसिव अप्रोच पे जाएँगे अरविंद आखिरी 3-4 मिनट के लिए, बट अटैक पे जाते हुए। और ये एक्स्ट्रा टाइम 1 मिनट का टाइम है, लास्ट चांस फॉर कर्मटिक का। एक भी अगर पॉइंट उनको निकालना है तो यही अटैक पे उनको गोल स्कोर करना होगा, ड्रॉ निकालना होगा, देन जाके उनको 1 पॉइंट मिल सकता है, नहीं तो 0 पॉइंट के साथ आज संतुष्ट रहना होगा। मे बी 0 पॉइंट के साथ संतुष्ट रहना पड़ सकता है, बट अभी भी कंटिन्यू होता जा रहा है। फाइनल विसल नहीं बजा है, बट इस बार बजेगा। जमशेदपुर एफसी, अरविंद फाइनली वो करके दिखाए। ये उनके पूरे एंटायर सीजन का पहला विन है। और ये विन कब आया? जब चेन्नई एनएफसी को सबसे ज्यादा जरूरत था ये 3 पॉइंट की। चेन्नई एनएफसी के हाथ से छीन के लेके आए गेम को, 3 पॉइंट भी लिया, एंड वो जंप भी करेंगे इधर ईस्ट बंगाल एफसी के ऊपर, क्योंकि ईस्ट बंगाल के पास अभी 4 पॉइंट है, एंड विद 3 पॉइंट्स 5 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जमशेदपुर एफसी। तो बहुत ज्यादा लाजवाब। एंड अरविंद, यू ब्यूटी। चेन्नई एफसी के पैरों तले धरती खिसक चुकी है अभी। Oh my goodness, what did we witness? Carmen Tikka, a very rare sight, losing his individual matchup, and Arvind creating magic. That this pass, TT, this pass will go on to haunt Carmen Tikka completely, and such a huge shocker. Now Kerala Blasters FC, Hyderabad FC, they would all be, hoping, yes, this is what we wanted, this is what we were waiting for, because they have a fighting chance right now. With Chennai FC, we thought they could have sealed it off. I do not know what happened with Tikka there, because Naveen, in fact Arvind, kind of just took over commencement of that second half. And Jamshedpur FC were looking oh so strong. Naveen, especially with his attacks, that creativity that came in, and so difficult for Carmen Tikka to face off against him. And as a result, he's managed to win. And as we take a look at the scorecard, 3 points, folks, secured. What an intense matchup. It was a thriller. We were all waiting with our bated breaths, and Arvind has done this. At the moment for Jamshedpur FC, they'll take home those 3 points. These 3 points aren't going to help them in qualifying or making it to the playoffs, but have put a huge thorn in the path of qualification for Chennai FC. With that, even that 6th spot has opened up. Could be anybody's. As we take a look at the MVP, certainly has to be Arvind, and yes, he is indeed. When required, not for his club, but for the others, this man has stepped up. He's the Batman tonight. The Dark Knight rises, and he did. Oh my goodness, CT. This was absolute goosebumps. 2 प्लेयर थे इस पूरे मैचअप के ऊपर जिनका फॉर्म ठीक नहीं जा रहा था। एक थे अरविंद, एक थे नवीन। अरविंद, जिनके पास पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ मोमेंट्स के खुशियां छोड़ के, और वो इधर कमबैक करते हुए दिखे, वो इधर जीतते हुए दिखे। एंड आई थिंक इधर जमशेदपुर एफसी के लिए आज के दिन के लिए हीरो है वो अरविंद होंगे, क्योंकि डीके वो तो डिलीवर करते आए हैं, उसमें कुछ न्यू नहीं था, बट आज अरविंद ने जो किया है शायद किसी ने सोचा नहीं था, शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कर्मन टिक्का को रोकना, उनकी क्रिएटिविटी को रोकना, उनके गोल स्कोरिंग एबिलिटीज को उधर रोकना, आई थिंक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि कर्मन टिक्का जब आते हैं वो कम गोल्स के साथ तो संतुष्ट नहीं रहते यूजुअली, वो गोल्स करते हैं बहुत सारे, बट फिर भी 1 गोल पे उन्होंने रोका था और 2 गोल उन्होंने स्कोर किया, खुल के खेले, जिसका पूरा खुल के उनको रिजल्ट भी मिला।
A very beautiful matchup, and Jamshedpur FC in their final few games did rise up to the occasion and cause one of the biggest upsets right now. Still, Chennaiyin FC will be hopeful. They have one more game remaining. If they win that one, things could work out for them. They could still make it to the playoffs. But we're gonna find that out the next time we come with Chennaiyin FC's matchup. But that being said, we have approached the end of this fixture, folks, because right now we're going to be tuning in for a short little break. Coming right after is going to be a huge, huge match you would not want to miss.